अर्जुन हार गोविंदों सिमरो सिरि हार आए सिरि हार कृष्ण जी ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए कर नौरी दावे ताए सब थाई होई सहाय 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होई सहाय. In science we are having Kajal Chabra and she would be taking the session of hands-on activity in science subject and she is a subject expert in human genetics. She is presently working as volunteer academic training in next education. We are having another speaker, Shruti Adhikari. She is also academic trainer and subject expert in computers. She would be taking the session of robotics. So training sessions of today's event would run simultaneously. Science and computers. Science and computer tutor will accompany both the teachers and will go to for the computers room number 19 and first head, shoulder, head, knees, toes, knees, shoulder, head, shoulder, knees, head, knees, toes, shoulder, head. Nice, very nice. Great. एक चीज तो पक्की है, बॉडी पार्ट सामने. That's confirmed. Sir, no sit stand. No sit stand. We are good listeners? Yeah. Amazing. हुणे पता लगेगा मैम कितने अच्छे हैं. हुणे अरे ना start ऐसा warm up है ना. With all my due faith in you and I trust you कि तुसी बहुत बढ़िया अच्छे listener हो. Let's figure it out. Now, your head is your shoulder. Your shoulder is your head. Your knees are your toes and your toes are your knees. ठीक है? करना वही. But जो मैं बोला कि head touch की करना, जो बोला shoulder, जो knees हो दो, जो toes बोला दो. चलिए शुरू करिए. All right, here we go. 3, 2, 1. Head. Shoulder, head, knees, toes, head. first training of mind is that ये head है और ये shoulder. Exactly. मैं दोनों चीजों में लिंक करा था. Confused and the training of mind. Confusion हुई किथे? Confusion किथे हुई? Confused केड़ा body का part होया? यदि है confused, but knees, toes पर confused हो. And second part, what she said. Take one hand or training from her. The technical terminology she stated, अपनी brain से distinct की हुई है. ये है. So it is going to the IR sensor, and it is the IR sensor on the basis of detection of the IR radiation, it is giving some value. Okay, and on the basis of those value, we can program the robot to move accordingly. Yes. Before the wheels comes here, the sensor is already facing here. Are you getting it? So it is not detecting anything. Sensor पहले यहाँ है. So it is giving the information to the brain कि हाँ, now it is going to fall. So तभी इसको आगे लगाया है, so that it is getting the information, right? So it is not like it is detecting the edges, it is detecting if something is not there. Because it is coming into contact with it beforehand, before the wheels come into action, no?
Wheels are far behind. This is how we have to be very careful when we're designing the robot. We have to make sure wheels are a little much behind from the sensor. So this is the mechanics while we are building the model, right? So right now it is detecting nothing is there. So it is not detecting anything. So we are programming the robot that when sensor is not detecting anything, it will turn either backwards or it will make a left turn or it will make a right turn. But when it is detecting, right now see, it is detecting this table, right? So when it is detecting, it will keep on moving forward. Here also it is detecting, right? But here it is not. This is the time when it is taking a turn. Any queries here, teachers? So this is the scientific. Yes. The directions are taken randomly or left, right, and Anything concept we is can used. do. Yeah, anything. At the end of the day, we just want to show the students that yeah, it is we are preventing it from falling down. So it's like you can take a back turn, left or right. Because just like take the real life application. Any other query here? So this is a scientific principle which is being used, and plus the mechanics I told you. Mechanics is very important when we are actually placing the sensor. Okay? Sensor should not be near the wheels. It should, because it has to come beforehand. It has to see something is not there. Right? So here mechanics come into play and students will use logical thinking, critical thinking to solve this problem. Right? Then robot. Right? So mechanical skills is being involved here. That is the engineering skills. Right? Okay. Students have to make sure each and every component is tightly attached. Each and every step, they can keep on tightening the screw with the Allen key. We have an Allen key which is used for tightening the screw. Okay, so they have to be very particular about it so that at the end no problem comes. So in each and every step, they are being careful that each and every connection is tight. Right? So this is how mechanics is very important. The engineering principle is important. Science, I already told you, right? And what about technology? I think we have already discussed, but we didn't come to the term technology. How is technology used when I showed you the working model over here? By collecting the data and then making the decision. Collecting data from Take the where? directions. Okay, from where now? By coding. Okay, yes. So through coding, they are understanding technology, right? Because how is the robot moving? I have done some programming, right? It is moving automatically. This is called automation. Okay, I have done some programming that when the sensor is not detecting anything, then it will take a left, right or backward. When it is detecting something, it will move forward. Right? So some programming has been done, right? Okay. So programming has been done. That means we are doing the programming. We are transferring the program to the brain. Okay. So this is called the brain of the robot. This is how the students will understand. They don't have to learn anything, right? They have seen the working model. Now many questions will come in students' mind, right? So this is how we are transferring the code to the brain. So I'll be doing coding on my system. Then through a USB wire, I'll be transferring the code to this brain. Okay, and then you can see we have attached the sensors also to the brain because it's the brain of the robot. This is how the coding is happening. This is how the data is sent from the sensor to the brain through these short cable wires. So this I am attaching to the brain, right? So brain has ports for the sensors. S1, S2, S3, S4. All of you can see? Brain has the ports for the sensors. It's a half time thing. Yes, ma'am? Switches are there. Yes, It's yes. a switch. Yes. Yeah, these have different ports for the short cables, right? So this is S1, S2, S3, S4. Okay. The asterisk one is for basically the advanced sensors, like ultrasonic sensors. So this is what the asterisk ports. The ports marked with asterisks are basically for inserting the advanced sensors like ultrasonic sensors. Okay. Rest are basic ports which are for basic sensors like IR sensor, touch sensor, etc. Okay. Similarly for the motors also you can see the ports. M1, M2, M3, M4, right? So we can connect the motors to any of the ports, but again, the one marked with asterisks are for giving the speed to the motors. So if you want more speed, you can connect the motors to these ports. Without asterisks, it's for only providing the direction. With asterisks, speed and direction, both. Is it clear? Any query here? No? Okay. There are various activities in which you will see more application of mathematics, right?
But just to understand, how do you think, like, we use the concept of mathematics for this model while building or operating the model? How can mathematics be used? Calculating the speed, distance. Okay. Okay. So basically we are setting the speed of the motors, right? So wherever the asterisk marks is there, there we are allowed to set the speed, medium, slow or high. So we can do it accordingly depending on the surface, right? And then any other thing? Again, speed is a science concept also. Volunteer activities in NGOs. Okay. तो हम आज साइंस को डिस्कस करेंगे और आप सब परफॉर्म करेंगे एक्टिविटीज, ठीक है? विल डिवाइड इन 3 ग्रुप. आराम से आप परफॉर्म करना हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, जो कि मेरे पास किट्स हैं. नेक्स्ट एजुकेशन के मेरे पास किट्स हैं. और इफ आई टॉक अबाउट द कंपनी, इट स्टार्टेड इन 2007 एंड वी हैव ऑल काइंड ऑफ सॉल्यूशंस with respect to administration, curriculum, books, smart classes. जैसे मैंने बोला 21st century skills आ गई हैं, तो बच्चों को 21st century skills वैसे हैं क्या? आई थिंक नीचे भी एक सेशन अभी होने वाला है 21st century skills पे. Any idea about what are 21st century skills? जो हमारे क्लास में तेज बच्चे हैं ना, वही critical thinking, yes ma'am, critical thinking, great. और भी कुछ हैं? experiential learning, हाँ, correct. Yes ma'am. Anything else? Active participation. Active participation. Problem solving. मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी. आई थिंक आपके फैमिली में भी कोई ना कोई तो नीट की तैयारी कर रहे होंगे, गेट की तैयारी कर रहे होंगे. When I started preparing कंपटीशन लेवल, तो वो एकदम सेटबैक आता है कि अरे हम तो अभी ऐसे प्रिपेयर कर रहे थे, अभी ये एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स एमसीक्यूज आते हैं, हमें इस तरह से प्रिपेयर करना है. वो एकदम से बहुत प्रेशर बन जाता है, राइट? तो 21st सेंचुरी स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स आती हैं, जैसे मैम ने बताया क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप क्वालिटीज भी, आईटी स्किल्स भी इन्वॉल्व होती हैं. आजकल तो चैट जीपीटी चल रहा है. तो एक्चुअली में चैट जीपीटी के पीछे भी ह्यूमंस ही हैं जो उसमें डाटा फीड करते हैं, उसके पूरी टीम है उनकी, राइट? तो आईटी स्किल्स भी इंक्लूड होते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स में. तो बच्चे, अगर हमें लगता है कि बच्चे तो बहुत एडवांस हो गए हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं, उनके लिए तो वो बहुत नॉर्मल We will take an initiative. That I take the initiative to do this, right? Productivity. When they are building the model, they are doing some productive work, right? Social skills, again, they are socializing. So 21st century skills are applied while building this model, right? Okay. So this was a sample working of this robotic model, a sample model which I created for you to understand about 21st century skills and the step integration, right? Okay. So again, now you all are aware of the parts. Yeah. So see, with this multiple things that happen. Just to show the working, I showed just the working. And now you are easily familiar with the parts, right? So this reduces a lot of time. So what is this part called? Brain. Perfect. These are the because we actually saw the working. So we know that the motor is something which makes the wheel work, right? Okay. And these are the all these. This rectangular plate, what are these called? The building materials. The student will be requiring for building the model. These are the metal components, right? Okay. This is the sensors. Perfect. And these are the cables, short cables, right? Connecting cables. Okay. So we are aware of all these parts, right? There is a manual remote control. This is basically we have introduced for grade 3 students because as per our curriculum, we are not starting with coding from grade 3. We are starting from grade 4 because grade 3 students are this. They should first understand how to build the model. We are starting with the basics. So once the student knows how to build a model, then slowly from grade 4 they can start with the coding. So while building the model, they can operate with a manual remote control. So students have a lot of fun while working, operating with this manual remote control, right?
right? And another code. Now it's quite obvious where I have to attach. Without the asterisk. Okay, to which part of this robot I have to basically attach the code? Perfect. Now you all know. See how simple it is. Okay. So now, can you tell me in which code? In M we attach the motors, right? In S we will attach the sensors. Is there any code which you can see where you can attach the remote control? Yes. The remote control. M motors. Okay. Now I wish to attach the remote control. So this I will attach to which port of the brain? What is the name? It's R. You all can see. So how easy it is, like R for remote, M for motors, and S for sensors, right? Okay. I'll just attach this end to the remote control. Okay. So if any of you can come, you'll enjoy operating this manual remote control. Okay. Okay, first what we have to do? Okay. Yeah. Is it operating? It's operating. When you're moving this joystick, is the robot working? No. Why do you think so it's not working? When I switch. Which switch? Okay. Okay. Fine. Anything else? Acha, tell me one thing. What is this remote control attached to? Brain. Okay. So why do you think why this remote control is not working right now? Any idea? Why is it not working? Switch in the We need to switch the brain because it's connected to the brain, right? Okay, the switch of the brain was off. Yeah, now fine. Is it moving? Teachers, you all are able to see. So there are two joysticks. One is for moving. The left one is used for moving M1 and M2. Motors attached to M1 and M2 port of the brain. And the right one is used to the motors attached to M3 and M4. So right now we have attached the motors to only M2 and M3. So M1 and M4 one will not work. Only M2 and M3. So left one is used for operating M1, M2 and right one M3 and M4. So one from this one and one from this one because it is M2, M3. Any queries here, teachers? Anything which is coming in your mind, anything, you're free to ask anything. Why we have put in M2 or M3 only? We can put in any of the Any of codes, the but just I said no asterisk one, no? Asterisk one are for providing the speed and the direction. And the basic one without asterisk, it is used for only the direction. Try exploring, making move forward, backward. So this is how students will explore on their own. How we can make it move forward. Grade 3, yes. Even grade 1 the students. Yes. Interested in operating the model with a remote control. Structure of mouth. Teeth. Collaboration. Yes. One activity. How many activities are really budget? Ma'am, maximum I think 10, 15 will be there. I think it. But along with this, बहुत सारी एक्टिविटीज हम अभी आपको दिखाऊंगी सिमुलेशंस ऐड होंगे जो क्लास में नहीं कर सकते वो सिमुलेशंस में अवेलेबल है मैं अभी आपको
यहाँ से जाना है, मैंने चलिए use is, am, are, helping verbs, tips पे हैं मेरे. Hats off to those teachers. But अगर आप कहें मैं अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता हूँ ढंग की, and if I have got to learn that speaking in English due to my teachers, due to my schooling, not really. This is what I realized when I got into my first job, and when I got to listen something from my manager. Hey Gaurav, either you work on this, because the people you are talking to, they are sitting there in US. उन्होंने पंजाबी हिंदी समझ नहीं आती. To an Indian, you can speak in bilingual language and the Indian will understand, क्योंकि Indian भी वैसे ही पढ़ा है. But US या किसी भी और कंट्री का बंदा जिसके लिए एकमात्र लैंग्वेज जो कॉमन है वो इंग्लिश है, तो उसको इंग्लिश प्रॉपर बोलनी पड़ेगी. You will be out of your job. Then I realized that literally I had to study that English language speaking part again, after completing my studies. हम इंग्लिश तो पढ़ा देते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उनको फोनेटिक्स पढ़ाते नहीं. And English pronounce करने के लिए we have to have understanding of phonetics and phonemes. For example, मैम आप दीदी पीछे आपके दीदी आप WATER कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? अभी WATER मैम. Water. थैंक यू मैम. लास्ट में जी. वाटर. ओके. फर्स्ट इंग्लिश में कभी भी र साउंड नहीं होता. र. और अगर मैं ये W की जगह V लगा दूं फिर कैसे प्रोनाउंस करूं? WATER VATER. डिफरेंस कैसे होगा प्रोनाउंसिएशन? वाटर. फिर भी वही रहा. चेंज कहाँ आया? Are you getting my point? ये मैं मेरा यहाँ पे पर्पस आप लोगों को डिमीन करना नहीं है, पर मैं आपको जो मैंने फेस किया लाइफ में वो बता रहा हूँ. दिस इज व्हाट आवर स्टूडेंट्स फेस व्हेन दे गो फॉर इंटरव्यूज. हम यूनिवर्सिटी में हैं, बच्चा अच्छी डिग्री अच्छे ग्रेड्स लेके आता है स्कूल से, यूनिवर्सिटी में भी टॉपर होता है, बट व्हेन द चाइल्ड फेसेस द इंटरव्यूअर वो अपनी इंट्रोडक्शन भी नहीं ढंग से दे पाता. दैट इज अ हार्श फैक्ट. That is why people in India, they are qualified but they are not employable. I am using the word employable. And अगर पंजाब की बात करो, 57% of the audience, the students in the Punjab are not employable. इंडस्ट्री कहती है तुम्हारी जो डिग्री और ग्रेड्स है ना वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि 60% वाला बंदा भी वही बैठा होगा, 90% वाला बंदा भी वही बैठा होगा. जॉब किसको मिलेगी? जिसके पास स्किल्स. और पंजाबी में एक बड़ी अच्छी सेइंग है ना, जेदे पल्ले दाने. सो दाने इन आवर केस रेफर्स टू स्किल्स. मैम डिफरेंस ये है कि अगर मैम बता रहे थे फिनीम्स जो र अल्फाबेट है वो वॉइसलेस साउंड है. फिनीम्स वैसे आवाज नहीं आती. व्हाट इसलिए जब कभी भी आप किसी इंग्लिशमैन को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं तो हमें लगता है कि आधे वर्ड खा क्यों जाते हैं, क्योंकि वो वॉइसलेस अल्फाबेट है. और अगर V से स्टार्ट हो रहा है तो यू कट योर लोअर लिप्स. अगर W से स्टार्ट हो रहा है यू मेक अ वो. वाटर. ये है डिफरेंस. तो शेप बन जाती है माउथ की अलग अलग अगर फ्रीज पढ़े हो. ये मैंने कब पढ़े थे? ग्रेजुएशन के बाद. My son's name is Sartaj. Sartaj. He is in New Zealand. हाँ जी.
And his friends pronounce her name like Stretch. Exactly. Stretch. मेरे को गौरव नहीं बोलते हो, गौरव. Because it's an Indian name. और इंग्लिश में बात करूं वहां साउंड ऐसे होता है. हमें हमारी गलती है, हम पढ़ाते हैं A for apple. वो बच्चा समझ लेता है कि जो एप्पल में साउंड है वही ए का साउंड है. ई ऐसे चलते हैं साउंड. ये चैलेंज. एनीवे हम उसकी बात ही करें कि आप अपना पैटर्न ही चेंज कर दो, वो जो चल रहा है, बट जस्ट वर्क ऑन द स्ट्रैटेजी, राइट? नाउ ये है जी लर्निंग स्टाइल. मैम ने बात करी 35-40 मिनट्स की. इधर मैम हमने दो एग्जांपल्स, दो टीचर्स की एग्जांपल ली. जो भी आप टेक्निक यूज कर रहे हैं क्लास में, जस्ट लुक एट इट, और उसका सामने परसेंटेज लिखा है, कितना परसेंटेज वो बच्चा रिटेन कर पाएगा. यू गेट अ क्लैरिटी रहता है. फिर हमारी कंप्लेंट रहती है जी बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा. अजी बढ़िया टीचर हो, माय डियर, स्कूल मैनेजमेंट और जो स्कूल का जो पेरेंट्स है वो किस पे देखेंगे? उनका जो इवैल्यूएशन मैट्रिक है वो क्या है? मार्क्स नहीं आए जी. आप हो गए बढ़िया टीचर अपने घर, मार्क्स, आउटकम क्या है? आउटकम नहीं आई. ये है लर्निंग पिरामिड. चलिए अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, और ये है लर्निंग स्टाइल्स. हर बच्चा सेम तरीके से नहीं सीखता. बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमें पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी ऑडियंस को जानना पड़ेगा. ऑडियंस कहां से है? एग्जैक्टली. और हम हर बच्चे का एक एकेडमिक रिपोर्ट कार्ड तो बनता है. वेरी हम्बली आई ऑलवेज सजेस्ट एक बच्चे का पर्सनालिटी रिपोर्ट कार्ड भी होना चाहिए. सपोज ही हैज टॉट मी इन एनी क्लास, तो एक साल तक मैं इनके साथ था. प्राइमरी में यूजुअली एक या दो टीचर होते हैं, ज्यादा नहीं होते. तो उन्होंने मुझे एक साल ऑब्जर्व किया. नेक्स्ट ईयर जब भी मैं किसी और क्लास में जा रहा हूं, व्हाटएवर ऑब्जर्वेशंस ही हैज फॉर मी, वो नेक्स्ट टीचर को देंगे. वो रिपोर्ट कार्ड बनेगा कि सर ये बच्चा स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है. सर ये बच्चे में कौन सी पेडागोजी चलती है, ये कौन सा लर्निंग स्टाइल का बच्चा है. ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, सॉलिटरी है, सोशल है. तो अगर वो मुझे अपना पर्सनालिटी रिपोर्ट कार्ड भी आगे दे दे, नेक्स्ट टीचर को आसानी होगी कि नहीं बढ़ाने के लिए. तो ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की. चलिए अब वो लेसन प्लान प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या सेट करना पड़ेगा? अपना एक मोटिव, एम, कि ये जो 35-40 मिनट्स मैंने इसको पढ़ाना है बच्चों को, इसके बाद आउटकम क्या होनी चाहिए. इसलिए यूनिवर्सिटी में जितने भी करिकुलम बनते हैं ना, हम भी आईपी और सिलेबस बनाते हैं, सबसे पहले अगर कोई काम हम करते हैं तो वो होता है कोर्स आउटकम. कि जब ये पूरे सेमेस्टर में बच्चा पढ़ेगा कोर्स, इसकी आउटकम क्या होने वाली है. अगर वो आउटकम अचीव होगी, वेल एंड गुड. नहीं हुई, यू आर द फेलियर. और मैं ये नहीं कहता 100%. अगर 70% भी अचीव हो रही है, वेल एंड गुड, क्योंकि हम अपनी क्लासेस में हमेशा डिवाइड करके चलते हैं 2-6-2, 20-60-20. जो टॉप 20 हैं वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, उनको आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ एक गाइडेंस दे दो, वो पढ़ लेंगे. Right now, I showed to you on the offline mode, but then again the features remains the same. Okay? The basic coding blocks remain the same. Net is on. We can get it on that. If you want, I can do it, but then again it depends, like if I'll be able to transfer the code. Sir, That is working now. So we can directly type over here. So car.cc. Avishkar.cc. You need to go to this website. it doesn't work. It's a little slow.
website over. So from this website, you can easily download two softwares we need to download. One is Avishkar Maker Studio and the other will be Avishkar Burn 2. So ABT will be used for detecting the brain. It is required for the burning process. For example, when we insert a pen drive, the system is detecting the pen drive, right? Similarly, we will need to use an ABT tool, ABT software, which will detect the brain. I'll show you how. Okay, this is, I'm just opening. Can scratch itself, and when you click, you can see all the blocks. You can see all these blocks are inside this control block, right? Simple drag and drop. Okay, and here the language which is being used is Python language. So students will be able to understand the application of Python. They can understand that we can make a robot operate by using this Python language. So on the right side, whatever block I will write now, you will see on the left side over here, text-based coding will be there. I'll just try writing one code. But then you will be able to see. Okay. Now you can come here. You will be able to see. I don't think so. If I'm turning this side. Okay. So see what I have done is. This is my program block. I'm going to drag and drop it here. Okay? Simple drag and drop. So mouse we cut there. No problem. Right? So you can see my program को मैंने drag कर दिया और drop कर दिया. Students you can see. Okay? अब बेसिक ये है कि मुझे करना क्या है. अभी सबसे पहले सिंपल कोड लिखते हैं just to start with. Okay? What I will do is, I will print some value in the brain. Print statement, simple print statement. In the word, like a print statement. In simple English, we say something which is being printed, right? So we are printing something on the brain, right? Now for taking the print statement, we will take this display. Display means to print. That means print का block कहाँ होगा? Display के अंदर होगा, right? So I just click on display. Okay. So when I click on display, you will see the print instructions. Can you see? One is print integer, then the other is print character. If you want to come here, print character, right? So what will be the print integer? It will print which value? Integer, numbers, right? Print character. It will print alphabet. Like print string. String will print inverted comma. the text, written text, right? So depending on your availability or your working of the model, what block you want to take. So right now I will take print integer or whatever. अगर आपको कोई नाम print कराना है, तो आप क्या लिख सकते हो? Print string. अगर आपको number display कराना है, तो क्या लिखोगे? Print number. Character, print character. Okay. So let's just display any of your name. Okay. I have done this activity with the students. They're like, oh, please print my name, please print my name. Okay. So print a string. So मैंने यहाँ पे देखो drag and drop किया है, right? And I have taken the print string block, right? Okay. Now string में लिखा है ABC लिखा हुआ है. वहाँ पे मुझे इसको rename करना है किसी का भी नाम. Any of you can tell me your name. What name should I print? Meter yes. Neeja. What is the spelling mark? NEERJ. अच्छा. RJ, ना? See. So print string nature. Okay, and it is being printed on row 1 of the brain. So brain has different. Brain का जो display screen है ना, उसमें different rows होते हैं. Row 1, row 2, row 3. Yes. Yes. So if I put a loop, it will be shown forever. Because starting में हमें confusion ना हो बच्चों को कि output नहीं आता. So what I do is I put a loop right. ठीक है? So loop I will get under the loops block, right? So I will be clicking on the loops and I have taken the repeat block. Now you can see any doubt you can tell me. That print block I have put inside loop. Repeat by loop. Okay?
Okay. Right now in while we're not putting any condition, that means loop will run infinite. जब हम एक कंडीशन डाल देते हैं तो जब तक वो कंडीशन ट्रू है तभी वो रन करेगा, बट यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, इनफाइनाइटली करेगा, तो आपको वो प्रिंट कंटिन्यूअसली दिखाई देगा, वो गायब नहीं होगा। ओके, नाउ सिंपल कोड लिखा है, ट्रांसफर करते हैं वन कोड टू द लैपटॉप। Other to this port of the brain, right? ठीक है, attach कर दिया। Right now just switch it off. Okay, fine. Now you can see, you all can see an option, save option over here. Students, you can also come here. Teacher को नहीं दिखेगा। Yes. You can see. Okay, मैं ऊपर कर दूँगी कोई बात नहीं। See. I'm really sorry, actually I would have got the HDMI cable. Okay, yeah. So you all can see, teachers here. I've connected this to this, right? Now can you see status connected? That means the connection अभी proper है. अगर status disconnect होता है तो burning process में problem होती है, right? So you can see the save option here. You can see save. Yes. Okay. So student, any of you can come here. आपको नहीं मिला ना, आप आए हो ना? अच्छा आप आए थे, ठीक है। अभी सेव पे क्लिक करो and give this project any name of your choice, any creative name. Students are very interested, they give their own name, robot का or anything. इसलिए robot आपने देखा कैसे वर्क कर रहा है? Give it anything. ठीक है, पहले एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं कहाँ पे सेव करना है, ठीक है? Now give it a name. Any creative name. Type करो. Good. Robot. Students are lot of fibers. Robot का, ठीक है? Save it. Save करो, complete करो. Good. Good. So teacher, you all can see. Okay. ठीक है, मैं अभी के लिए थोड़ा सा आपको You can also see he has saved the code. He clicked on the save button and he has saved it. ठीक है? अभी आपको save के बिल्कुल साइड में compile का ऑप्शन दिख रहा है? इसको नहीं दिख रहा? आप सबको दिखा? You can see compile? Yes. You can see what? You can see what? Okay. Compile you can see? If you're not able to see, let me know. I'll just bring it closer to the screen. Okay. So compile option. Okay. What does compilation do? Transferring the object code into source code. To collab. Okay. Object code into source code. Right now, what is the object code? A Python language. Very good. Okay. And what is the source code? Machine language. Very good. So compilation is converting the Python into machine language. So compilation के टाइम में कोई भी error होगा ना कोड में आपको दिखाई देगा. ठीक है? So you can click on compile option. करो. आपका फाइल में आ जाओ. Very good. So compilation is going on here. Done. That means कोई error नहीं है हमारे कोड में तो ट्रांसफर कर सकते हैं. Right? कोई error होगा it will show you. Right? Now compile के बिल्कुल साइड में you can see the burn button. Yes. हाँ, you are able to see the burn button. Compile के साइड में you can see compile के बिल्कुल साइड में burn का बटन है. Compilation कर दिया, कोड में कोई error नहीं है. ठीक है? You can see the burn button. You can see the burn button now. है ना? Okay. Burn means जैसे CD burning process होता है. Burning of code from here to here. तो उसके लिए अगर आप USB नहीं करेंगे burning successful नहीं होगा. This is a very silly mistake which normally happens and a common mistake. It is very important to put this USB cable. Okay, then we get a common error. It's not working. Okay, I'm just clicking on work. Can you click on work? Connected नहीं है. Because you see disconnected is coming over here. ठीक. See. ये थोड़ा loose था connection. That's what I said. It is a common mistake which happens in this. Okay. Now it's coming connected. दिख रहा है? Green आ गया? Perfect. Now you can click on burning successful लिखा हुआ आ जाएगा जब code successfully burn हो गया. It's a very simple coding process. Okay? तो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये हम डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू. मल्टीपल डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड. This is a free application. It can be downloaded easily from this website. avishkar.cc. And students can work on it offline. अगर ऑनलाइन में ना सिस्टम में एनीवेज avishkar.cc लिंक डालना है ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं.
But if there's no internet, then also they can still work. Okay. So now I will remove the USB. ये अभी कोई रोल नहीं है, कोड ट्रांसफर हो गया, right? So now the robot will not detect the error, because I have replaced the code. मैंने कोड को replace कर दिया, तो अभी क्या करेगा? बस print करेगा नीचा. You just print it. Okay, ma'am, you can see your name. Your name is printed. ठीक है? Okay. Ma'am's name is printed here. Okay. ठीक है. This is a very simple code for student to understand the basic of coding. उसके अभी पता नहीं कि सब कुछ सही है, but ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंपल कोड लिखिए. अब हम लंबे कोड में स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, right? So do you want me to write down the code for moving the motors? Any of you would like to come and try? कुछ नहीं करना, बस you all have gone from scratch. Simple drag and drop करना. If you want, I can give you the mouse. You can also come. Without mouse, you can come along. हाँ, remote can help each other. Want to use the mouse or you are able to do it? ठीक है. अभी मुझे क्या करना है ना, इन मोटर्स, अभी आपने देखा मोटर मूव नहीं कर रहा था, मुझे अभी इन मोटर्स को मूव कराना चाहिए. सिर्फ मोटर, राइट? मोटर लिखा हुआ है, सो ये क्लिक मोटर, मोटर पे क्लिक करो. हाँ. अब देखो ये वाला ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है? मूव मोटर एट पोर्ट 1 बेसिक. पोर्ट 1. तो हम अभी हमें पोर्ट 1 करना चाहिए या कौन सा पोर्ट करना चाहिए? पोर्ट 1 बेसिक. हमने मोटर्स को कौन से पोर्ट में अटैच किया? M3 M2. M2 M3 M1 में नहीं किया ना, तो हम M1 सेलेक्ट नहीं करेंगे. या तो अगर आपको M1 लेना तो आप मोटर को भी पोर्ट 1 में कनेक्ट करो, राइट? हमें M2 M3 लेना है क्योंकि मैंने अपने मॉडल में M2 M3 में कनेक्ट किया है. यू ऑल कैन सी फीचर्स, राइट? अगर मुझे M1 है तो चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो व्हाट यू वांट, M2 M3 या M1 में कनेक्ट करना है? ड्रॉप डाउन तो चेंज कर सकते हो, वैसे आप M2 कर सकते हो. ठीक है, कट. O2 क्योंकि यहाँ पे M2 है, ठीक है? So this we have to be careful. ठीक है, अब इसको ड्रैग कर लो और यहाँ पे प्रिंट के नीचे प्लेस कर दो, बिकॉज ये हमें रिपीट के अंदर डालना है, राइट? क्योंकि हम चाहते हैं मोटर्स कंटिन्यूसली मूव करे, इसलिए मैंने रिपीट लूप के अंदर इसको ऐड कर दिया. ठीक है, ओके. सो मूव मोटर हो गया. पोर्ट 2, आप इसको कौन सी डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो? गाड़ी का मूवमेंट देखा है, व्हील्स का मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है जब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट? और टर्न लेते हैं तो अलग डायरेक्शन होता है. तो वैसे ही स्टूडेंट्स रिलेट कर सकते हैं कि ये व्हील्स जब हम मूव कर रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. तो ये भी आप कोडिंग के थ्रू सेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रोबोट को हम कौन से डायरेक्शन में मूव कराना है, राइट? तो अभी हमारा मेन मोटिव क्या है? रोबोट को क्या कराना है? टर्न कराना है, मूव फॉरवर्ड कराना है या मूव बैक? व्हाट डू यू वांट द रोबोट टू डू? Move forward, right? So normally teachers, if you can see no, in this model, motors जो है वो opposite direction में placed है या फिर same direction में? You all can see. If you are not able to see, let me know. यहाँ पे जो हमने motors का placement किया है ना, is it in same direction or in opposite direction? ऑपोजिट. ठीक है, इसलिए नॉर्मली क्या होता है, अगर वो सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों को क्लॉकवाइज मूव कराती और वो मूव फॉरवर्ड होते. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो अगर मैं दोनों को क्लॉकवाइज करवाती तो वो सेम मूव फॉरवर्ड होते, राइट? क्योंकि यहाँ पे ये ऑपोजिट है, तो मूव फॉरवर्ड के लिए एक को क्या करना चाहिए? क्लॉकवाइज, और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज. क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट हो गई. ठीक है, इसका भी लॉजिक है. इसमें मतलब कि सेम, अगर दोनों को आप सेम में करोगे ना तो आप क्लॉकवाइज कर सकते हो, बट इट्स एन ऑपोजिट. मूव अंदर से दोनों क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं, बट ये ओरिएंटेशन डिफरेंट है. ठीक है, इज इट क्लियर? सो यू कैन, ओके, क्लॉकवाइज. अब एक और आपको दूसरा मोटर मूव कराना है. अभी आपने मोटर, कौन से मोटर को मूव कराना है? मोटर एट पोर्ट 2. ठीक है, अभी हमने दो मोटर्स यूज किए, राइट? सो मोटर एट पोर्ट 3 को मूव कराना है, तो उसका भी पोर्ट 2. अभी तो आपने पोर्ट 2 कर लिया ना. हाँ,
यस वेरी गुड। उसको उस ब्लॉक में ना कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल से कंट्रोल। अगर आपको टर्न कराना है तो दोनों क्लॉकवाइज होंगे। यहाँ पे लॉजिक ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ऑपोजिट ओरिएंटेशन में प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है। ओके, सो व्हाट दे हैव डन इज पोर्ट टू को क्लॉकवाइज किया और यहाँ पे आप स्पीड दे सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने इनको एस्ट्रिक्स वाले पोर्ट्स में कनेक्ट किया। एस्ट्रिक्स वाले पोर्ट हमें स्पीड देते हैं, ठीक है। बेसिक वाले अगर आप M1 लोगे तो आपको स्पीड का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, कोई सिर्फ M2 M3 में दिखा रहा है, राइट। तो आपको स्पीड कौन से स्पीड में स्पीड से मूव कराना है, हाई मीडियम स्लो, दोनों को है, एक को हाई एनीथिंग यू कैन मेक बोथ मीडियम और वन मीडियम वन हाई। स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर कि कैसे हो रहा है, एक मीडियम एक हाई किया, दोनों हाई किए, दोनों स्लो किए, तो कैसे मूव कर रहा है। दिस इज हाउ दे विल एक्सप्लोर, दे कैन फ्री डू दिस, there's nothing to learn here, ठीक है। तो they have made both of them move with a medium speed, ठीक है। okay then your code is done। okay now click on save। save इसलिए करना है क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं कोड को, इसलिए। okay then next after save what you have to do, after save saving is done। saving के बाद क्या करना है, केबल चल, ठीक है, केबल कनेक्ट कर दिया। आप क्या करोगे, हाँ के बाद जिसके किया। So compilation will convert the Python language into machine language, that is the binary language, right? And कोई भी error है आपको दिखाई देगा। Compilation हो गया, no error in the code, very good, ठीक है। अभी compilation के बाद next what will you do? burn में क्या होगा, कॉपी जाए मैम इसे से ये तो CD बर्निंग प्रोसेस होता है ना। कहाँ पे कॉपी होगा, ब्रेन, ठीक है। वो डन, It's working, see, and you can also see, you know, whatever name they have given, file name क्या दिया था बच्चों ने अभी, रोबोट का, वही फाइल नेम यहाँ आपके ब्रेन में रिफ्लेक्ट है, देखो रोबोट का। इससे आपको क्लियर होगा कि यही कोड ट्रांसफर हुए हैं या कोई और, रोबोट का यही फाइल। तो दैट मीन्स सेम कोड हैज बीन, परफेक्ट कोड हैज बीन ट्रांसफर। फाइल नेम विल रिफ्लेक्ट, अगर फाइल नेम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा मतलब एरर है कोड ट्रांसफर की प्रोसेस। दिस इज हाउ वी कैन डिबग द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। कोड रिप्लेस हो गया पहले, हाँ कोड रिप्लेस हो गया, गुड। फाइल नेम भी चेंज हो गया ना आपने, ओके फाइल अपडेट हुआ है, सॉरी सेम फाइल नेम था पहले का, ओके परफेक्ट। So this is how the simple coding procedure is there. You want to see more of coding or you want to have one session on building? We can have a session on Building. Building what? Building के बाद, if you want to again try on coding, you can do it. Okay? But how much time we have right now? At how many electrons and protons can be are present in specific elements? Okay, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। सोचो जो बच्चे करेंगे और बच्चे अपने काम हम भी करेंगे, ये एक्साइटेड हो सकता है कि हम बोले कि हम करते हैं ऐसा हो सकता है, बट इट विल बी रियली फन, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं करते हुए बहुत सी चीजें जो हम कर रहे होते तो हम बाकी चीजें भूल जाते हैं, तो बच्चे भी ऐसे ही करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो यही फायदा है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का, यही एनईपी भी कहता है, और ये हम करते भी आ रहे हैं, आप भी घर पे करते होंगे। जैसे छोटे बच्चे आते हैं ना किचन में काम करने के, मम्मी रोटी बनाओगी, दैट वाज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती कि मम्मी मुझे बनानी है रोटी। छोटे बच्चे कहते हैं, बड़े होके उनको नहीं इंटरेस्ट होता, बट दोस आर हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। तो दिस इज व्हाट वी हैव। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हम कई चीज़ें नहीं कर सकते क्लास में। अब हम न्यूरॉन को अगर हम बताना चाहें कि कितने सोडियम आयंस बाहर आ रहे हैं, कितने बाहर पोटेशियम आयंस आ रहे हैं, हम नहीं बता सकते। फॉर दोज वी हैव सिमुलेशंस। सिमुलेशंस वो होती है जैसे कि वीडियोस नहीं होती, वीडियो से अलग होती है। सिमुलेशंस आर समथिंग, हम अगर इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट भी चेंज होगा, तो वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड नहीं है, लूजन करने के लिए एंटी गुड। This is how it can be done quickly. It will be completed in 35 minutes duration itself, even earlier than that. Depends on the model. ठीक है? Feel हो रहा है? Tight हो गया? Right. Now connect another yellow. Who will do that? ठीक है. Who has not got the chance?
दिस इज हाउ स्टेप, जब हम ग्रुप में भी करते हैं ना मैम, अगर 5 स्टूडेंट का ग्रुप है, एक स्टूडेंट एक स्टेप कर लेगा, देन अनदर स्टूडेंट कैन डू 1 स्टेप, बिकॉज दिस मॉडल रिक्वायर्स मल्टीपल स्टेप्स, राइट? What steps do you advise to the students before making? We have a booklet. We are providing a booklet for grade 3 to 8, 12 activities that we are providing grade wise. And for every activity, we are having a set of formats. One is the first is learning objective of the activity. Second is materials required. I'll show it to you. So this we are giving with the kit itself. For example, one of the activities, edge avoidance, मैंने अभी आपको दिखाया. It is the same activity I have built using this procedure only. So you can see for every booklet, set of 12 activities है. ये activity number 9 है. इससे पहले we have those activity number 8. ठीक है? So if you can see here, we have this objective. This is the objective of the activity. What is the objective? To build a edge detector robot. ठीक है? And then we are providing with the materials required. साइंस में होता है कि हाँ इस एक्टिविटी को बनाने के लिए 2 स्क्वायर प्लेट चाहिए, 2 रेक्टेंगुलर प्लेट चाहिए, ये सब हमने ऐड किया. देन मटेरियल, देन बिल्डिंग योर रोबोट. सो स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग इज गिवन कि पहले स्टूडेंट को ये लिखते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, वही सेम मेथोडोलॉजी यहीं पे लिखा है. पहले रेक्टेंगुलर प्लेट लेना है, देन ये अटैच, एंड देन हाउ दे आर अटैचिंग द नट्स. एवरीथिंग इज गिवन फ्रॉम द टॉप bolt and from the bottom they are attaching the nut. So step by step सारे procedure है. That is I said one student can perform one step, photo exploitation भी हो सकता है. Right. So you can see step by step everything is given in a step wise manner. हर एक component जो add कर रहे हैं उसमें step wise mention है यहाँ पे. Right. So you can see how they are attaching the caster beam. We are attaching two U-beam assemblies and then we are attaching the caster beam. Obviously there is no one method. Students अपने अलग method, ये तो बस beginner के लिए हाँ students को एक idea मिल जाए, they can do it in their own ways. That again depends on the time duration. There are multiple ways of collecting one thing, right? Because हमारे पास multiple metallic plates है. It's not necessary हमको U-beam ही use करना है. बाकी components भी explore कर सकते हैं. Main motive क्या है? Normally workshop what I do ना, I tell students whatever steps are mentioned now take the main motive. Main motive logic क्या है? Logic ये है कि caster भी ground में touch करना चाहिए. अब these are the components, do it yourself. So students do it. Logic they should understand what is the logic of it. Then they can do it in multiple ways. Right? So you can see here step by step everything is there. Right? तो जब ये बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, ये हमारा मॉडल बन गया. At the end of it, this is the output model, right? And then after that, your robot is ready. We mentioned here. ठीक है, उसके बाद आता है कोडिंग. कोडिंग का भी स्टेप बाय स्टेप. तो पहले मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मटेरियल्स इकट्ठा कर लो, फिर उसके बाद बिल्ड करो, बिल्ड के बाद अब हम करेंगे कोडिंग. तो कोडिंग इज ऑल्सो देयर कि कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करना है. AMS. So we have mentioned, we have shown the interface. This is the AMS which I showed you right now. कोडिंग के लिए है ना. देन सबसे पहले ये ब्लॉक लेना है, वो कहाँ मिलेगा? कंट्रोल पे. ये भी मेंशन है. तो दिस बिकम्स वेरी इजी. माय प्रोग्राम इफ यू टेक फ्रॉम कंट्रोल, ये मेंशन. उसके बाद आपको रिपीट लेना है. वो कहाँ से लेना है? हमने टेक्स्ट में मेंशन किया है. इफ यू टेक इट फ्रॉम लूप्स, सो एवरीथिंग इज देयर स्टेप बाय स्टेप. देन मूव मोड कहाँ से लेना है? वो टेक्स्ट में मेंशन है कि मूव मोड, राइट? कोडिंग का भी हर एक ब्लॉक का एडिशन वी हैव एक्सप्लेन. देन उसके बाद हम ये वेरिएबल का ब्लॉक डिफाइन किया. उससे पहले आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा. वेरिएबल पहले से बनाया नहीं आएगा, तो वेरिएबल इज समथिंग बच्चे अपने खुद का वेरिएबल बना सकते हैं ना. लेकिन गिव इट एनी नेम. फर्स्ट दे हैव टू क्रिएट, दैट आल्सो वी हैव मेंशन. उसके बाद वो डिफाइन में जाना है. ठीक है. देन प्रिंट का ब्लॉक लेना है. प्रिंट का ब्लॉक कहां से लेंगे? डिस्प्ले में जाना. सो दिस इज हाउ वी हैव कंट्रोल में जाके आपको टाइम का ब्लॉक मिल जाएगा. सो टेक्स्ट में सब आ जाएगा. Then plug and play. Plug and play again. What do you think plug and play will be? By the name. हाँ बोलो. जो मॉडल केबल को प्लग करते हैं. हाँ. तो जब कोडिंग हो गया, अब कनेक्शन करो. सबको स्टेप बाय स्टेप है कि हाँ अब केबल्स का, क्योंकि कोड कैसे काम करेगा? वरना कोड तो काम नहीं करेगा, तो आप केबल से कनेक्ट नहीं करोगे, राइट? सो मोटर्स का केबल कनेक्शन,
We are connecting the motor to the motor pole, sensor to the sensor pole. क्योंकि body में भी तो mention कर रहे हैं ना ये section इसके लिए कौन सा केबल कहाँ obviously students तो कहीं भी कर सकते हैं यहाँ पे हमने define code किया है तो students कोई भी code में add कर सकते हैं right? Then now what we have is after plugging the science concept कि हर एक्टिविटी को करने के लिए बच्चे कौन से साइंस कॉन्सेप्ट सीखेंगे स्टेम इंटीग्रेशन ओके सो दिस इज द साइंस कॉन्सेप्ट लिखिए आफ्टर दैट द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रोबोट साइंस कॉन्सेप्ट हो गया एंड देन द रियल लाइफ इफ दे हैव सीन एनी सिमिलर रोबोट anywhere in factories or in industries which is being used right for making the task easy so that also we have mentioned in real life application section. Then you can see teachers the do it yourself section. This is question and answer session. So this will generate more curiosity among students कि अगर suppose मैंने वो मोटर अटैच किया है अब उस मोटर का मैं डायरेक्शन चेंज कर दूँ तो क्या होगा अब हमारे पास दो सेट ऑफ मोटर्स है वन इज दैट ऑरेंज एंड वन इज ग्रे ऑरेंज वाले हाई स्पीड है एंड ग्रे वाले हाई टॉर्क है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाई स्पीड एंड व्हाट इज हाई टॉर्क राइट सो अगर हम ऑरेंज के बदले ग्रे डालते हैं सो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन हियर तो क्या होगा ठीक है अगर हम एक ही मोटर अटैच करें तो क्या होगा तो सच क्वेश्चंस आर देयर प्लस some theoretical questions are also there. So basically self question and answer session is there, right? Then my observations, students will write down their own observations on the activity. उनका क्या observation है क्या उनको extra और add करने का मन था add कर सकते थे या add करना चाहिए तो they can definitely add it, right? And then you can see there's a scan code. Can you see what QR code at the bottom? This is for having access to the audio visual modules. So basically there's a platform, a learning management platform. It will redirect the students to that platform. And there we have added audio visual modules like the building video. Step-by-step method of building the video. All the videos are there. We have explained the building procedure for all the activities in those videos. Plus at the coding video also we have explained the coding procedure. Everything starting from connecting the wires, opening All the the website. chapters which you have added in this list. For all chapters it is added, for all the 12 activities and for all the grades. So basically this kit-based activities we are providing for grade 3 to 8. So for grade 3 to 8, for every grade, for every activity, set of 12 activities for each grade, videos है and real life application की भी video and science concepts की भी video. All the videos are. So if you can see, this was one activity, objective, building procedure, coding, then plug and play, then do it yourself, then my observation, and then the scan code. It's common for all. Are you providing any platform, like if they have made any project, they can add their, they can give their contribution also. Just they can upload their project. That Avishkar is providing. Avishkar is providing something. It's there. The sales team will tell you more about it, but Avishkar is providing. It's conducting some competitions also. That is from Avishkar. So basically, when the school is purchasing the kit, we are providing training to the teachers in the beginning. And in between, refresher trainings are also there. That sales team will tell you about the duration. And then, if the teachers require any online support from their end, we are there, like when they're building the model. Because when you are actually doing it, then we have more queries, right? Rather than first we are attending a training session. Then that time we may not have. But when we are taking the class, then we may have more queries, right? So we are taking online session also. The subject matter experts will come and they will resolve the queries. But anytime you require the support, we are there. Yes. Yes. Means your session is very good. We would like to call you again for the. I would love to come here again. Really. Don't you think? Yes, It's very informative. Thank you so much, ma'am. Thank you for all of you. So this is the basic methodology for all the activities. Okay. Anything else? So they are really. ठीक है अभी जो कर रहे हैं ना and we can
कैन चेक वोल्टेज ऑल्सो कि कितनी वोल्टेज फ्लो कर रही है। अगर उसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं सीरीज में जैसे ये तो हम पैरेलल में करवाना चाहते हैं, तो हम कितनी वोल्टेज से जा रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमारे पास आगे दिया हुआ वोल्ट मीटर और एमीटर भी दिया होगा, वी कैन कनेक्ट दैट। ठीक है, ओके, तो वैसे नहीं था आज के लिए। मेरे पास एक और एक्टिविटी है बट उसको बहुत टाइम लग जाएगा, आई थिंक हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लिखे हुई ने, please read those instructions first carefully and then follow them, solve them. Hold on madam, hello. Instructions pass हो रही है देख, hold on. नहीं है ना, देखो एमी वो फिर पंजाबी च कहते ना काली अगे क्यों काली कर रहे हो, फिर कारण होंगे दस्या। प्लीज पहले इंस्ट्रक्शंस अच्छे ना ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर हो जाए, मुड़ के करी जाओ, ਤੁਹਾਡਾ टाइम है, राइट। इस शीट ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਊਐਵਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ all the team members will raise their hand, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, then I'll tell you the time ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। Read all the instructions first and then follow them as a team. Your time starts now. Write all your अपनी वॉल्यूम रखना। जी मेरे को ना पढ़ना नहीं आ रहा। Write down the difference in time between the two watches. Hat is equal to reverse of the page. What you think upright ऊपर से देखा। साइकिल बनानी है हाँ चलो देखिए बाय 1:30 चलो वापस बैठ जाओ। थोड़ी साइलेंट में बोला सब we have done. मैं इसे करके कह रहा ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹੋਲਡ ਔਨ, ਰੀਡ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸੀ 3-4 ਵਾਰੀ, ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੋਟ ਰੀਡ all the instructions first carefully. ਹੁਣ ਵੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੀਡ ਕਰੋ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਐਡ ਐਮਐਡ ਕਰਕੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, and it was very clearly told in the beginning, please read all the instructions first. ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏंगे ਪਿਛਲੇ। कोई पुट्ठा साइकिल पढ़ा रहे
कोई अपने नेबर की घड़ी से टाइम चेक करे, कोई उन्होंने होल करके सर्कल करे, कोई 50 ਨੂੰ 12 एंड हाफ में डिवाइड करे, कोई बड़े प्राउडली खड़े होके आई एम द लीड है, और मैनू मैं नाम ही लावा विचों आज भी इस तरह से आई एम द लीड के नहीं देखा ही नहीं। मैं क्या बेटा कोई नहीं, रुक जाओ जरा 5 मिनट बाद, फिर तुसी देखोगे की कर रहे हो उसे। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, are you getting the point? ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, why are we here today? This is why we are। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੋ ਅਰੇ ਭਾਈ ऑनेस्टली दसना 4 इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। केड़ी केड़ी 1 2 20 20 ਉਹਨਾਂ 4 इंस्ट्रक्शंस की पहले चीज लिखा अपने नेम, अपने टीम मेंबर्स ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਚਾਰੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਟੀਮ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। 2 minutes only. इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ोगे मैम पहला। और ट्राई टू अंडरस्टैंड ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡਲੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ the last team took almost 11 minutes। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੀਡ ਕਰੋ, और ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਾਈਕਲ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਹ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਲਟ। एग्जैक्टली Main instruction 15 minutes go through the question paper। ਇਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। When everything was told to you very crystal clearly, why were you mixing the lotus? Why were you mixing the lotus? नहीं, why were you mixing the lotus? Meaning? ਤੁਸੀਂ ਕਮਲ ਕੋਟ ਰਹੇ ਸੀ। Now the class with me यही करा रहे हैं, right? And if our child makes a mistake, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ rectify ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ what do we do? What do we do? ਅੱਜਕੱਲ I know ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਪੇ ਦੌੜੇ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ when ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਮਾਸਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਖਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਓ ਕਾਕਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ now we cannot even give looks to the students, they are very sophisticated है ना। और किधर किधर मैं नहीं कहता कि सिर्फ स्कूल का ही रिस्पांसिबिलिटी है, the first school is home। और इस करके आजकल के ਜਿਹੜੇ मॉडर्न पेरेंट्स ने ना, they somehow do not know how to parent, और इस करके पेरेंटिंग एक $1 billion इंडस्ट्री कोचिंग सेक्टर बन गया। मतलब नवे मापियां ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ पेरेंटिंग ਕਿਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। That's a different topic, मैं उस नहीं जाऊंगा। Somehow we have to justify our job। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ moral responsibility ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਿਹਾ, try to understand the root cause ਕਿਉਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਦੀ। You never know, ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, how will that child be interested in studying? You never know। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦੇ ਚਪੇੜਾ।
The child is very confused. ਉਹਦਾ mindset ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ mindset ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ head ਹੈ, shoulder ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾ। That cannot happen in a day. Rome was not built in a day. ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। It is our moral responsibility ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਸਟ ਯੂ ਲਰਨ, ਦੈਨ ਯੂ ਅਨਲਰਨ, ਦੈਨ ਯੂ ਰੀਲਰਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਰਾਉਂਡ, ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਅਨਲਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਰਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਉਂਡ, ਅਰਥ ਇਜ਼ ਸਫੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਨਲਰਨ ਕਰਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਲਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਉਂਡ, ਅਰਥ ਇਜ਼ ਸਫੇਅਰ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਨੋ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਫੇਅਰ, ਅਰਥ ਇਜ਼ ਇਲਿਪਸ, elliptical orbit ਹੈ। अच्छा वो भी लर्न करता है। So this learning, unlearning, relearning is a continuous process. And I'm sure ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ, we are dead over there, we are ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ we are dead at 25, we are just buried at 75। ਕਿਉਂਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, 25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ, ਲਰਨਿੰਗ ਖਤਮ। अपग्रेड करते रहो, अपस्किल करते रहो। अदरवाइज आने वाली ਜਿਹੜੀ जनरेशन है ना, that is generation alpha, generation Z ਤੋਂ ਬਾਅਦ बहुत कमे ने हो। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। they will tell it to you on your face ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਪੜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, फोन सारे को नालों नाल गूगल बाबा चल रहा होता कि जो कह रहे हैं सही, क्रॉस चेक एंड दे विल क्वेश्चन यू। ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਡਮ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, I guess being a teacher, if you are not able to justify the answers of yourself, then how come you can call yourself a teacher? प्लीज अपने आप को अपग्रेड करो। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ, you can ask the child, well I don't know right now but I'll surely get back to you, or please get back to the child। ਇਹ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਤਾ, the child observes। और खास करके ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ till the age of 7 child learns so many things। and ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਵੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ। That is why it is always suggested to a pregnant woman कि वो उदां ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀਆਂ। Right ji? So be the change that you want to see in the world, said by Mahatma Gandhi। Good है। Thank you so much। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ patiently, amazingly ਇਸ session ਵਿੱਚ participate ਕੀਤਾ ਹੈ। hope ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਥੋਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਹੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਟੇਕ ਅਵੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਟੇਕ ਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10% ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ that is why the theme of our Disha department is empowering the teachers। Right ji? Now can we all raise our right arm? Turn the palm. Take it back, give yourself. Well, amazing, good job. Thank you so much. You all have been a lovely audience. Thank you. Ma'am is an expert now. After experience, it's very easy. Starting. हाँ